लेट्स गेट स्टार्टेड। यस्टरडे हम लोगों ने कुछ एस ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, एंड दैट एस ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट, प्राइस, देन कोट, देन वी डिस्कस अबाउट contract, then we discuss about order, and finally we talk about the assets. तो हमने सिनेरियो कंसिडर किया था that we have own a company with a name called Samsung, and we run a campaign. uh, we actually run two different campaign. One is holding campaign, another is TV ad. And through the TV ad, we got a lead with a name called Paradise Hotel. और उस पैराडाइज होटल को हमने कांटेक्ट करके वी कन्वर्ट दैट लीड इनटू आवर अकाउंट कॉन्टैक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी. Then we calculate the estimated revenue based on that opportunity. So to calculate that opportunity estimated cost, we add product, we also add a price book, then we send the quotation to that particular contact associated with the account, and then uh, that particular person is agree with us on a given quotation. एंड फिर उसके बाद में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, एग्रीमेंट क्रिएट किया बिटवीन द टू organization, and then we create an order. We took actual order from the that account, and then we create these assets. ये पोर्शन हम लोगों ने कल कवर अप कर लिया था. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मूव अहेड and let's talk about the few more objects which is relevant with the CRM in a Salesforce. So assets हो गया था, and we also come to an conclusion that मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का काम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया. नेक्स्ट आता है केसेस. अभी ना आपने उनको एसीज डिलीवर किए, डिलीवर करने के बाद में दे have an issue in your AC. No, when you have an issue relevant with your any product, तो आप लोग जनरली क्या करते हो? Generally you call to the customer care and you talk about the problem that you are going to face, or you were facing. Okay, तो वो प्रॉब्लम को आप डिस्कस करते हो आपके कस्टमर केयर के साथ में, और वो क्या करता है, आपकी केस रेज करता है, एंड दे ट्राई टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशन रिलेवेंट विद दैट केस. सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हमारे सीआरएम के अंदर केसेस क्रिएट करेंगे, एंड फिर उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज केसेस? केसेस इज एनी इशू और अ प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय एन अकाउंट. सो दो अकाउंट कौन है जिसको हम लोग प्रोडक्ट और गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके तरफ से अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो केस करके रेज होगा. एंड सॉल्यूशन इज बेसिकली प्रोवाइड a step by step solution or the resolving steps to solve the particular cases, right? तो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है सॉल्यूशन के अंदर. सो अब क्या करेंगे, let's go to your developer org and try to create a cases for the Paradise Hotel. So just go to your, जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को कि मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेवेंट काम हमारा खत्म हो चुका है. नाउ वी नीड टू सर्च फॉर द सर्विस application, because service cases and solution are the part of your service cloud and the service application. That's why we need to search for the service application. Just click on the service application. Once you click on the service application, you come across the tab called cases, right? So to register your case, you just need to click on cases, and once you click on cases, you just need to click on new. नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन न्यू टू रेज अ केस. तो अभी जनरली क्या होता है कि आप कस्टमर केयर पे फोन करते हो एंड यू टेल देम कि ये वाला मेरा प्रॉब्लम है. सो ये न्यू केस है, अभी न्यू केस है, वर्किंग है, एक्सेलेंट है. तो ये पर्टिकुलर केस का स्टेटस क्या है, ये फिलहाल आपको सिलेक्ट करना है. सो इनिशियली जो भी केस आएगा वो न्यू केस होगा, दैट्स व्हाई न्यू इज सिलेक्टेड ओवर हियर. किसने आपको ये केस असाइन किया है या फिर कौन से पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू ये केस आया है? सो गोपाल माधव इज द पर्सन हु इज रिलेवेंट विद द
Paradise Hotel. Okay, so contact name is Gopal Madhav. Then it will ask you about the account name. So account name is Paradise Hotel, from where you can receive this case. You can also set a priority, either set this priority to low, medium or high, depend कि कौन से priority पे आपको इसको रखना है. Then you need to select the case origin. You can get this case from the phone call. So customer care पे phone आया तो हमने phone call case origin रखा. Then it will ask you about the type. कौन से टाइप का एरर है या फिर कौन से टाइप का प्रॉब्लम है. मैकेनिकल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और अदर टाइप का है. सो बेसिकली इट इज मैकेनिकल. और वो पूछेगा केस का रीजन क्या है, फॉर विच पर्पस यू हैव पुट दिस पर्टिकुलर केस. तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन, equipment complexity, performance, breakdown, equipment. So what I'm going to do, I would say it is an type of electrical case, and because it is a breakdown, ये AC मेरा काम नहीं कर रहा है. So I would select all those case reasons and all those stuffs. Then you can put this optional thing over here. जैसे कि आप वेब इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो. Then additional information and description if you want to add for that particular case. तो आप लिख सकते हो. Now at the bottom you can see this checkbox over here. यहाँ पे लिखा है send a notification email to contact. If you select this, तो आपका केस रजिस्टर हो गया है. ये ऑटोमेशन होगा, मतलब ये पर्टिकुलर केस आपका मेल किया जाएगा टू द कॉन्टैक्ट पर्सन. तो जनरली ऐसा होता है कि आप कॉल करते हो, फोन करने के बाद में आप इसको बोलते हो कि ओके योर कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड, और फिर आपको एक मैसेज आता है, कभी कभी मेल भी आता है. सो ये ऑटोमेशन आप यहाँ से कर सकते हो. तो यहाँ पे ईमेल का ऑटोमेशन गिवन है, तो आप इस पे क्लिक करोगे एंड सेव करोगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगा दैट योर केस हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली. So you just need to click on save to register your case. Now you can see you are able to register your case. So this is the detail about your case, right? This is the fields in your case. Now you can see, dear Gopal Madhav, thank you for contacting us with your inquiry. Reference ID, ये सारा मेल हम लोगों ने उसको भेज दिया गया है ना. So this mail is posted from our side. And if you go to the call logs, text post and status change, तो ये फिलहाल कोई ऑपरेशन यहाँ से रिलेवेंट हम लोगों ने परफॉर्म नहीं किया है. दैट्स व्हाई नथिंग इज डिस्प्लेड ओवर हियर. एंड इफ यू गो टू ऑन द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे केस के डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे. सो यू कैन सी द डिटेल कि किसने केस रेज किया है, किसके लिए केस रेज किया है, टाइप क्या है, केस का रीजन क्या है, एंड ऑल अदर स्टफ्स आर देयर, राइट. रिलेटेड में जाओगे, if you go to the related, you can see the activity relevant with this cases. Okay, और इसके relevant history वगैरह सारी चीजें यहाँ पे given है. So basically we haven't covered this activity right now. तो ये फिलहाल इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये अभी इतना ही याद रखो कि केस हम लोग रेज कर सकते हैं by going to case tab, and by just clicking a new button we are able to create a new case, right. तो अभी हमने क्या किया, केस लिख लिया है. नाउ अब इस केस पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए. सो लेट्स ट्राई टू ऐड अ सोल्यूशन. सो गो टू योर ऐप लॉन्चर एंड सर्च फॉर द सोल्यूशन. And when I search for the solution, you can't find anything relevant with the solution. So basically, all the material which is relevant with the object or app is present in this app launcher. And if you don't find solution over here, it means that such kind of object is now not available in this Salesforce, राइट. तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि सॉल्यूशन नाम का हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमको पढ़ना है. तो बेसिकली लाइटनिंग इंटरफेस के अंदर सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता. यहाँ पे सॉल्यूशन नाम का कोई ऑब्जेक्ट वर्क में नहीं आएगा. सो क्या करेंगे, अभी हमको स्विच करना पड़ेगा. किधर स्विच करेंगे, वी नीड टू स्विच टू द क्लासिक फॉर द सॉल्यूशन, राइट. तो सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट हमें किधर मिलेगा, क्लासिक इंटरफेस में मिलेगा. लाइटनिंग इंटरफेस में से उसको हम लोगों ने हटा दिया है. सो स्विच टू द क्लासिक इंटरफेस. वंस यू स्विच टू द क्लासिक इंटरफेस, यू जस्ट गो देयर
and search for the services, and in the services you can find the solutions, right? If you click on the solutions, then here you can able to create a solution for the problem. Let's click on new. Let's give the name solution. Let's say elect electrical solution, right? सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या क्या लिखना है हम लोगों ने, लेट्स से कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। लेट्स से स्विच ऑफ द मशीन। ओके, ये मैंने सॉल्यूशन लिखा फॉर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। देन आई एम गोइंग टू राइट अ solution for mechanical problem, or you can say electronics problem. Let's restart your machine. और एक और सॉल्यूशन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से अदर, and I'm going to define a solution for that. Wait for technical assist, technical expert to visit your location. So this is the solution which I have fitted in a solution tab. So now go to your cases, and you can see I have already been created a case. Uh, अब ये जो केस है, ये केस का डिटेल्स अगर हम लोग नीचे देखें, so you can see this case is new, medium, and all those stuffs are given over here. If you go to the detail, you can see the details. यहाँ पे आप देख सकते हो that this particular case is raised, और टाइप क्या है, इलेक्ट्रिकल है, ब्रेकडाउन है। तो अभी क्या होता है, whenever you call to that particular कस्टमर केयर, तो आप सारी चीजें बताते हो कि आपका नाम क्या है, कौन बात कर रहा है, कौन सा प्रॉब्लम जा रहा है, तो ये सारी चीजें केसेस में नोट डाउन किए जाती है। वंस दैट थिंग्स आर नोटेड डाउन इनटू द केस, फिर कस्टमर केयर वाले क्या करते हैं, इसके नीचे सॉल्यूशंस आता है, यहाँ सॉल्यूशंस में टाइप करते हैं। लेट्स से कौन से टाइप का आपका प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सर्च करते हैं। Basically, it is going to search for the electrical problem, and then find the solution. Now, once they search it, तो इधर आप देखो इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट सॉल्यूशंस अब यहाँ पे अपीयर होते हैं। नाउ यू कैन सी स्विच ऑफ द मशीन, इट इज दिस इज द सॉल्यूशन। तो वो आपको फोन पे बताएगा कि सर डू वन थिंग, लेट्स स्विच ऑफ योर मशीन, तो आप स्विच ऑफ कर लोगे। हाँ, राइट। तो इस तरह से सॉल्यूशंस लेके जाते हैं। अब देखो एक सिनेरियो में बता देता हूँ आपको, ताकि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आपके घर में मॉडेम होता है, वाईफाई मॉडेम, और वो वाईफाई मॉडेम अगर प्रॉपरली वर्क ना करे और आपने कस्टमर केयर को फोन कर लिया, तो उनको आप क्या कहते हो कि माय मॉडेम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मेरा ये नाम है, तो सारी चीजें केस करके नोट डाउन किए जाएंगे। फिर बेसिकली आपका मॉडेम वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सॉल्यूशन सर्च किया जाता है, मॉडेम नॉट वर्किंग, फाइंड अ सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन में स्टेप्स लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है स्विच ऑफ द मशीन, वैसे ही वहां पे स्टेप्स लिखी जाएंगी कि सर वेदर द रेड लाइट इज ब्लिंकिंग ऑन योर मॉडेम और नॉट। वो आपको पूछेगा, यू सेड यस, देन वो बोलेंगे एक काम कीजिए सर, वो वायर चेक कीजिए। फिर वो बोलेगा कि सर एक काम कीजिए, आप उसको मॉडेम को रिस्टार्ट कीजिए। फिर वो बोलेगा कि वापस सर एक रिसेट का बटन है, उसको क्लिक कीजिए। राइट। तो ये सॉल्यूशंस को कैसे बताता है, ही इज सो इंटेलिजेंट कि उसको पता है कि क्या क्या करना है, नहीं। बेसिकली वो सारी चीजें नोट डाउन की जाती है इनटू द सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशंस में वो सारी स्टेप्स मेंशन होती है। राइट। सो व्हेन यू सिलेक्ट दिस प्रॉब्लम, यू कैन सी द सॉल्यूशन इज गिवन टू दिस, और ये सॉल्यूशन पे इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये उनको पता होता है। राइट। और इसके अंदर क्या सॉल्यूशंस आपने प्रोवाइड किया है, वो सॉल्यूशंस यहाँ पे क्लियर कट मेंशन होता है कि आपने क्या क्या उसको इंस्ट्रक्शन दी है। सो स्विच ऑफ द मशीन, ये इंस्ट्रक्शन दिया था हम लोगों ने, तो वो इंस्ट्रक्शन उसने फॉलो किया, तो उसका इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम
कवर अप हो गया, राइट. सो इन दैट वे you are supposed to perform the service operation relevant with the cases and solutions. So I hope you'll understand the concept of cases and solutions, which is being relevant with this services application or the services, what we called services cloud, right? Which is a major part of your CRM. So we discuss about not only discuss about marketing application, sales application, we also discuss about the service application. Other than that, we have few more application or few more objects with us. पहला object है हमारा activity. So to whom you call activity? So scheduling a work to be done at a specific point of time, it is called activity. This activity is basically made up of two major objects. पहला object आता है task. Okay, so the work which need to be done is nothing but a task, and second आता है event, and that event is nothing but work must be done इन एसोसिएटेड विद अ कैलेंडर. मतलब आप क्या करोगे, कैलेंडर में एक इवेंट मेंशन करो. लेट्स से आपको मीटिंग करना है आपके क्लाइंट के साथ में, सो दैट इज एन इवेंट. तो वो इवेंट आप नोट डाउन करोगे कि चलो मुझे मीटिंग करना है हमारे क्लाइंट के साथ में ऑन 15 जुलाई. तो 15 जुलाई को आप क्या करोगे, एक इवेंट क्रिएट कर लोगे. एंड सिमिलरली आज अगर आपको फोन करना है आपके क्लाइंट को, है ना, रिगार्डिंग द मीटिंग, तो आप क्या करोगे, टास्क क्रिएट करोगे कि आज दोपहर 2 बजे मुझे मेरे क्लाइंट को फोन करने का है. सो बेसिकली एक्टिविटी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू ऑफ एस ऑब्जेक्ट कॉल्ड इवेंट एंड टास्क. And there is one more object called as calendar, which consists of date and time, and it is internally associated with this event. So whenever you create an event, you require a calendar, right? So when we require a calendar, we use this calendar object. So this calendar is internally connected with the event. Event and task is internally connected with the activity. Let's go to your Salesforce developer org, go to your lightning experience. Once you go to the lightning experience, and the home tab, you can see your events and your tasks, and we call this event and task as a activity. If you go to your cases, right, if you open in one of the case, तो इधर आपको दिखेगा, you can see this related tab, you can see this activity, and that activity is made up of two things. One is the task, another is the event. अब देखो आपके पास में क्या है, एक केस रेज हो चुकी है. इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो टास्क असाइन करना पड़ेगा या फिर इवेंट असाइन करना पड़ेगा, right? So to do that we have, or you need to perform the activity basically. So activity is nothing but task or event. So we are supposed to create a task and event relevant with this, right? अब क्या करेंगे, we go to this contacts and let's try to create a task. Okay, अब ये task create करने के लिए in this activity, on my right hand side you can see this activity tab and a chatter tab. If you go to this activity tab, you can see there is a first option called new task. The second option is called log call. Third option is called new event. So event and task is nothing but the activity basically. So let's try to create a task for this particular account. Let's click on new task, subject. हम लोग कॉल करेंगे. कब कॉल करेंगे, आज ही कॉल करने वाले हैं हम लोग. लेट्स सिलेक्ट टुडेज डेट. किसको कॉल करेंगे, गोपाल माधव को करेंगे, रिलेटेड टू पैराडाइज होटल. ओके, फोन करेगा. तो ये टास्क असाइन, क्योंकि अभी ये जो अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये अकाउंट में सिर्फ एक ही यूजर है, दैट इज होस्ट इंस्ट्रक्टर. दैट्स व्हाई इट इज ऑटोमेटिकली असाइन टू होस्ट इंस्ट्रक्टर. और इसका स्टेटस है नॉट स्टार्टेड, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है. नाउ लेट्स क्लिक ऑन सेव. Once you click on save, now you can see there is an activity or there is a task
which is now been created for this particular detail, for this particular contact called Gopal Madhav. तो यहाँ पे आप जाओ, तो यहाँ पे आपको केस दिखना है, तो केस किधर आएगी? बेसिकली ये केस असाइन हुआ है टू दी यूजर। तो यूजर कौन है? हम लोग हैं। हमको अगर वो देखना है तो वो किधर मिलेगा? हमको जाना पड़ेगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद में यू कैन सी वी हैव अ टास्क। टुडेज टास्क इज टू कॉल द Gopal Madhav, right? And whenever you done your calling, you can select this। इससे क्या हो जाएगा कि आपने वो टास्क परफॉर्म कर लिया, ये समझ में आएगा। सो with the help of that task button, you are supposed to create a task for your user। अब देखो हमारे कंपनी में 4 लोग काम कर रहे हैं, तो 4 लोगों को कुछ ना कुछ टास्क असाइन करना है। आज वो सवेरे आएंगे तो दिन भर में उन्होंने क्या काम करना चाहिए, ये मुझे तो उनको असाइन करने का है। तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर यूजर के लिए मेरे काम में सॉर्ट आउट कर लूंगा और उसको असाइन करूंगा बाय यूजिंग दिस टास्क। अब सपोज करो कि एक और मेरा यूजर है, मतलब मेरे कंपनी का एक एम्प्लॉय, उसको मुझे बोलना है कि जाओ और मीटिंग करो, राइट? किसके साथ मीटिंग करो? गोपाल माधव के साथ मीटिंग करो। कब कर मीटिंग करने का है? कल मीटिंग करने का है। एंड टू डू दैट मैं जाऊंगा कॉन्टेक्ट में, फिर मुझे गोपाल माधव को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए मेरे को इवेंट सिलेक्ट करने का है। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इवेंट, और इधर इवेंट का नाम देंगे मीटिंग। कब स्टार्ट होगी ये मीटिंग? स्टार्ट होगी, बेसिकली ये मीटिंग स्टार्ट होगी कल ऑन 26 सवेरे 11 बजे। 26 को ही खत्म होगी दोपहर फिर 12 बजे। सो 1 घंटे का ये इवेंट है, मतलब मीटिंग है। अगर ये मीटिंग आपको फुल डे रखना है तो यू कैन हैव एन ऑप्शन कॉल्ड ऑल डे इवेंट। तो इधर क्लिक किया तो वो इवेंट ऑल डे इवेंट करके क्लिक होगा। लेट्स से कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है तो जनरली वो इवेंट पूरे दिन का होता है। देन दैट सिचुएशन यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन कॉल्ड एज ऑल इवेंट, ऑल डे इवेंट। Then related to whom, it will ask you to which particular account this meeting is relevant। so आप क्या होगे, पैराडाइज होटल अकाउंट से रिलेवेंट है। किसको असाइन किया है? होस्ट इंस्ट्रक्टर को। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल एक ही यूजर है। इफ यू हैव मल्टीपल यूजर देन यू कैन सिलेक्ट द यूजर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिस्ट। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक यूजर है तो वही सिलेक्ट हो रहा है। लोकेशन, यू कैन पुट द लोकेशन, कहाँ पे आप लोग ये मीटिंग कर रहे हो। लेट्स से पैराडाइज होटल office, and let's click on save to create this event। अब ये इवेंट किसके लिए क्रिएट हुआ है? होस्ट इंस्ट्रक्टर। सो वेन एवर होस्ट इंस्ट्रक्टर विल लॉग इन एंड गो टू देयर होम टैब, राइट, तो यहाँ पे उसके लिए इवेंट क्रिएट हो चुका होगा। नाउ यू कैन सी दिस। चेक, यू हैव सेट दिस। इसको देखने को क्या गलत किया है सर। आई हैव created this event called as meeting to do this meeting with Gopal Madhav। ये कल करने का है हम लोगों को, राइट? ओके, क्योंकि मैंने आज के डेट पे वो मीटिंग शेड्यूल नहीं किया है, दैट्स व्हाई दैट मीटिंग इज नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन माय होम। कल जब मैं लॉग इन करूंगा तब ये इवेंट बेसिकली रिफ्लेक्ट होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू बेसिकली चेंज द डेट ऑफ माय मीटिंग ताकि वो आज का रिफ्लेक्ट हो गया, राइट? सो डू दैट, गो टू योर मीटिंग एंड डिटेल में जाके आपको क्या करना है, you just need to change the date, right? So I'm going to change the date from 26th to 25th of June, start date, and then click on save। Or similarly, I'm going to pick the date, तो start और end date change हो गया है।
Now I save this, go to your home tab. Now you can see the event is now appear in my home tab. So whenever I log in, मेरे रिलेवेंट जो भी टास्क और इवेंट होंगे वो सारे के सारे मेरे लॉगिन पे यहीं पे दिखाई देंगे. बेसिकली कंपनी में क्या होता है, कंपनी में एम्प्लॉय जैसे लॉगिन करता है तो उससे रिलेवेंट जो भी टास्क एंड इवेंट होंगे वो सारे के सारे वहाँ पे शो होते हैं. एंड डिपेंड अपॉन दैट फिर वो एम्प्लॉय दिन भर का काम अपना करता है, राइट. तो यू कैन ऑर्गेनाइज your employees in your organization by using this event and a task. Now जैसे मैं इवेंट जब क्रिएट कर रहा था, यू कैन सी दिस, गोपाल माधव में जाएंगे एंड यू कैन सी दिस इवेंट कॉल्ड मीटिंग. व्हेनेवर आई क्रिएट दिस मीटिंग आई रिक्वायर्ड वन मोर ऑब्जेक्ट कॉल्ड कैलेंडर. इधर जैसे ही हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे कैलेंडर मुझे यूज करना पड़ा है टू सिलेक्ट द डेट, and that calendar is basically relevant with the calendar object. So we cover this calendar object as well as we cover the activity. Why we cover, how we cover the activity? Basically we cover the activity, or the activity is basically a combination of your events and a task, and we know that we have created our event as well as our task. So this is called activity. तो हमने चार और ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे कवर अप किए हैं. One is activity, another is task, next is event, and last one is calendar. So up till now we have covered 17 objects. Let's count. One is campaign, lead, contact, account, opportunities, then product, then price, then quote. उसके बाद में हम लोगों ने quote के बाद में हम लोगों ने कवर अप किया contract, then order, then assets, then cases, solutions, activity, task, event, right? And the calendar. So we have covered almost 17 objects. अब इसमें सबसे लास्ट वाला एक ऑब्जेक्ट बचता है, that is called forecasting. तो बेसिकली फोरकास्टिंग इज यूज फॉर द प्रिडिक्शन, कि कितना प्रिडिक्शन करना, कितना सेल्स हमारा हो सकता है, हमारी कंपनी का हो सकता है ड्यूरिंग दिस मंथ, ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, हाफ ऑफ द ईयर, एन्यूअल. तो आपको जैसा प्रिडिक्शन करने का है वो प्रिडिक्शन आप फोरकास्टिंग ऑब्जेक्ट का यूज करके कर सकते हो. इट इज मेजर्ड एज अ रेशियो बिटवीन द टाइम एंड मनी. सो ड्यूरिंग दिस स्टिपुलेटेड टाइम हम कितना अर्निंग करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द फोरकास्टिंग, राइट. तो लेट्स से during this month if we are going to earn 1 lakh rupees, then 1 lakh rupees per month या फिर 1 lakh rupees in this month is our forecasting, कि 1 लाख रुपए का हमारा बिजनेस होना चाहिए. लेट्स से कि एक साल में मेरा 10 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए. सो वी आर फोरकास्टिंग दैट within this 12 month I need to be done 10 crore rupees of business, right? Always remember this forecast is depend upon the opportunity object. Without having opportunity object, we are not supposed to predict anything relevant with the forecasting. We are not supposed to predict anything, right? And you always remember that this option is not available in a developer org, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो अकाउंट क्रिएट किया था वो डेवलपर ऑर्ग में किया था. सो डेवलपर ऑर्ग में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये ऑप्शन अवेलेबल है इंटरप्राइज मोड में. और ये फोरकास्टिंग जनरली हायर अथॉरिटीज करती है कंपनी की. जो बेसिक एम्प्लॉय या डेवलपर है वो काम इस पे नहीं करता है. बस आपको एक आइडिया देने था मुझे कि फोरकास्टिंग नाम का भी एक ऑब्जेक्ट होता है विद इन दिस सीआरएम, जिसका यूज कंपनी करती है टू मेक प्रिडिक्शन कि ये महीने में इतना मेरा बिजनेस होना चाहिए, राइट. तो इसीलिए मैंने ये आप लोगों को फोरकास्टिंग वाला ऑब्जेक्ट बताया. बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू वर्किंग ऑन forecasting object, because forecasting object is not available with the developer, or it is only being available with enterprise mode. ओके, और एंटरप्राइज के लिए फिर आपको पे करना पड़ता है पर यूजर. तो मैंने वो आई थिंक इनिशियल जो फर्स्ट मेरा लेक्चर हुआ था तभी बताया था कि एंटरप्राइज के लिए कितना पैसा पे करना है, फुल एडिशन के लिए कितना करना है, राइट. तो उसके अकॉर्डिंग तो आप ये फोरकास्टिंग यूज कर सकते. सो विद दिस आई एम डन विद दिस सीआरएम, राइट. तो मेरा सीआरएम यहाँ पे खत्म हो गया. सीआरएम के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट सीआरएम का एग्जीक्यूशन देखा, जिसमें हम लोगों ने 3 क्लाउड्स कवर अप किए, जिसमें मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज आया. और मार्केटिंग का प्रोसीजर कैसे, मतलब मार्केटिंग का स्ट्रक्चर स्केलेटन किस तरह से सीआरएम में दिया है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया.
सेल्स से रिलेवेंट क्या क्या चीजें हम लोगों ने अवेलेबल करवाता है सीआरएम, ये भी हम लोगों ने देखा ना, और सर्विस से रिलेवेंट भी देखा, और एड ऑन्स भी हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझा। अभी जैसे कल मैंने आपको एक डायग्राम या फिर फ्लो समझाया था रिलेवेंट विद द सीआरएम, वो मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। लेट अस कंसीडर वी हैव अ कंपनी कॉल्ड सैमसंग, राइट? सो we have a company called Samsung. This Samsung run the campaign, okay, and once he run the campaign, he got the lead. So lead आपको आप मिलेगी after running this campaign, right? So after running this campaign, we got this lead, and after getting this lead, we convert this lead into three different things, right? तो पहला क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा अकाउंट. So we convert our lead into account. Then we also convert our lead into contact, and we also convert our lead into opportunity, right? So basically, this contact is internally associated with the contact account. Okay, so this account has their contact and their opportunity. Now, this opportunity calculate the estimated revenue based on the product, right? And price book. ये लो समझ लो आप कैसे जा रहा है. So based on this product and price book, we calculate this opportunity, and then we also calculate a quote based on this product and price book. Now this quote is associated with this opportunity, and we create a PDF for this quote. तो जिस कोड के लिए हमने क्या क्रिएट किया, पीडीएफ क्रिएट किया, and now that PDF we send it to as an email. Basically this PDF is sent via email. So हमने क्या किया, email send किया. इसको email send किया हम लोगों ने. Basically we send this email to the contact, right, which is a part of your account, or these are contact of your account, right? So ये फ्लो में आया हमारा. फिर हमने क्या किया, we made a contract. Once that particular contact is ready with this code, then we create a contract. किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, we done the contract with our contact, and then we took the order, and then we form the assets, right? So this is the basic flow. इस तरह से जाएगा. So to whom it is relevant, it is relevant with your, it is relevant with your contact and the account, right? So these two things are connected with this. Once you done with this, contract हो गया, order हो गया, assets हो गया, और फिर आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, डिलीवर हो जाएगा. Now all this portion, this particular portion is basically relevant with the marketing and sales. इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जब आप जो भी प्रोडक्ट है आपका जो डिलीवर हो चुका है, वो उसके बाद में आप क्या लेते हो, उसके लिए केसेस फाइल करवाते हो. सो यू जस्ट नीड टू फाइल द केस, and we also provide a solution relevant with this. We also provide a solution with this. Okay, who gonna provide a solution? Samsung gonna provide a solution for
पर्टिकुलर केस, एंड ये केस और सॉल्यूशन ये भी किससे रिलेवेंट है, तो बेसिकली दिस केस एंड सॉल्यूशन इज आल्सो रिलेवेंट विथ योर कॉन्टैक्ट. Yeah, so this is the complete flow uh, which is representing your CRM. Other than that, we also talked about the two more things, which is nothing but the task. So this is task and the events. So these tasks and event is basically relevant with this company called Samsung. क्योंकि ये employee से relevant task और events आते हैं, तो it is relevant with the company called Samsung. Okay, so we all gone through these various objects of your Salesforce CRM. So I hope you'll understand these things relevant with the CRM of CRM of your Salesforce. Uh, अब क्या करेंगे, अब मैं आप लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत दिनों से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे पता नहीं है. नाउ इट्स योर टर्न. आज जितने भी वीडियोस परसों कल और आज में हुए हैं, उसमें 3 दिन में हमारा सीआरएम कवर अप हुआ है, तो 3 दिन के जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स कवर अप किए उससे रिलेवेंट मेरे पास में एक टास्क है आपके लिए. नाउ वी हैव अ टास्क. दिस इज अ यूज केस एंड यू हैव टू सॉल्व दिस यूज केस, राइट, बाय योर ओन. तो ये सॉल्व करके आपको 2 दिन में मेरे को सबमिट करने का है. एंड द यूज केस इज लाइक दिस. Trinity Electronics and Home Appliance Trinity is an electronics and home appliance manufacturing company. They have planned to launch marketing of their 3 new products. So Trinity is the name of the company जो कैंपेन रन करेगा. बेसिकली उनसे 3 प्रोडक्ट के लिए कैंपेन रन करेगा. फर्स्ट वन इज द टैबलेट, सेकेंड इज फुल HD वॉइस ऑपरेटेड स्मार्ट टीवी, एंड थर्ड इज रेफ्रिजरेटर 750 liters with a 4 doors. This is the name of your product. So what you are going to do, you need to add this product in your product object first of all, and then you associate this standard price with that object. मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट के अंदर आपको वैल्यूज कैसे इंसर्ट करनी है और उसके साथ में स्टैंडर्ड प्राइस कैसे इनिशिएट करने का है. बट हियर 650 इज इन डॉलर. अभी आप ये डॉलर में नहीं रख के रुपीज में रखो, चलेगा, है ना. सो वी जस्ट अटैच दिस स्टैंडर्ड प्राइस इन द रुपीज, नॉट इन अ डॉलर फॉर्म. ओके, सो 650 रुपीज, 300,000 रुपीज एंड 2,500 रुपीज. तो ये इसकी प्राइस है. Now they have chosen to go with 4 marketing channels. तो उनको 4 मार्केटिंग करने, मतलब बेसिकली दे रन 4 campaigns. The name hoarding, radio ads, trade show and telemarketing. So they run these 4 campaigns. पहला कैंपेन है होर्डिंग का, उसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1.5 लाख रुपीज. रेडियो के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट है 60,000 रुपीज. ट्रेड शो के लिए है 80,000 रुपीज और टेली मार्केटिंग के लिए उसका बजट है 18,000 रुपीज, राइट. फिर क्या होगा, फिर थ्रू दीज मार्केटिंग चैनल्स, ये 4 मार्केटिंग चैनल में से हमको कुछ लीड्स जनरेट होगी. एंड देयर लीड्स आर 4 लीड्स फ्रॉम द होल्डिंग्स, यहाँ से 4 लीड्स आएंगी. 3 leads from the radio ads, 1 lead from the trade show and 0 lead from telemarketing. Telemarketing से एक भी lead नहीं है, but we got 8 leads from these 3 different marketing campaigns. आप देखो कौन से लीड है. सो 4 leads from the holding कौन से आए, 4 leads from the holding इज GTF स्पोर्ट्स एकेडमी, जिनका ऑर्डर हो सकता है 20 टीवीज एंड 150 टैबलेट का. AHA कैब्स सर्विस, इसके लिए 200 टैबलेट्स की ऑर्डर है. 6 पिलर रेस्टोरेंट, इसके लिए 15 रेफ्रिजरेटर की ऑर्डर है. मेट्रो रेलवे के लिए 150 टीवीज की ऑर्डर है. सो दीज आर द 4 leads विच वी गॉट फ्रॉम द होल्डिंग कैंपेन. रेडियो कैंपेन के अंदर हमें 3 leads मिला है. फर्स्ट लीड का नाम है VF फार्म लैब, हैविंग अ 200 रेफ्रिजरेटर का उनका लीड है. Then ADB real estate required 100 tablet and MT NGO required 10 TV. So these are the 3 leads which we got from the radio ads. Clear? अब इससे relevant contact name या फिर contact person के लिए नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो. So what other relevant data is required, that is the imaginary data जो आपको feed करने का है ना. तो इससे रिलेवेंट जितना भी इमेजिनरी, लेट्स से GTF स्पोर्ट्स एकेडमी में कांटेक्ट पर्सन कौन होगा. सो यू कैन
consider any imaginary name and add that name as an GTF Sports Academy. You can also assign the title to that imaginary person. Okay, let's say if you assign your own name और खुद का नाम अगर आप दे रहे हो तो उसका खुद का टाइटल भी आप सेट करो आपके हिसाब से जो आपको सही लगे. एंड देन लास्ट में आता है ट्रेड शो. दिस इज ऑल्सो अ कैंपेन. इसके अंडर हमको एक लीड मिला है दैट इज कॉल्ड CTP हॉस्पिटल जिसको 200 टीवीज एंड 80 रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत है. सो दीज आर द ऑर्डर विच दीज लीड्स आर गोइंग टू पुट एज एन बिजनेस टू अस, राइट. देन वी नीड टू क्रिएट अ न्यू प्राइस बुक, राइट. और ये प्राइस बुक का नाम क्या रखना है? न्यू ईयर ऑफर. और इसके अंदर फिर आपको डेविएटेड प्राइजेस, लीस्ट प्राइस आपको लेना है. सो स्टैंडर्ड प्राइस इज 650 एंड द लीस्ट प्राइस इज 350. FD FHD वॉइस ऑपरेटेड स्मार्ट टीवी के लिए प्राइस होगा 2500 एंड रेफ्रिजरेटर के लिए प्राइस होगा 2250, राइट. सो वी नीड टू assign a price book over to this. And then lastly it's a Trinity meets Vice President Williams. So ट्रिनिटी मीट्स वाइस प्रेसिडेंट विलियम ऑफ CTP हॉस्पिटल. इसका मतलब है CTP हॉस्पिटल के लिए जो कॉन्टेक्ट पर्सन होगा दैट पर्सन इज विलियम एंड हुज टाइटल इज वाइस प्रेसिडेंट. ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द CTP हॉस्पिटल. सो whenever you create such a lead you need to mention this data, right. And then we convert this CTP hospital, we convert this lead of CTP hospital and start working with them. So इसका मतलब क्या है? That lead is now converted into account, contact and object. We are also going to convert all these leads into account, contacts and opportunities. तो ये भी lead convert करेंगे, वो भी lead convert करेंगे, but इस पे work करेंगे. मतलब क्या होगा? Start working them. मतलब we need to send the quotation, right. And after giving the quotation, after agreeing with the quotation, we need to take uh, that particular person into contract, then take the order, take the assess sorry assign the assets. And then उसके बाद में आपको क्या करने का है? You need to assign a task, you need to assign a meetings, or simply you say you need to assign an activity for that particular person. So आगे लिखा है they have telephonic conversation and based on that they enter into the contact, take order. Okay, basically the contract चाहिए था. They enter into the contract to take the order. Trinity provide excellent customer service for the client thereafter. इसका मीनिंग है कि फिर आपको इमेजिनरी कुछ केसेस क्रिएट करना पड़ेगा फ्रॉम दी विलियम साइड, और किसके लिए? ट्रिनिटी के लिए, और उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस आपको असाइन करने पड़ेंगे, राइट. सो दिस इज द टास्क, or you can say a use case for you. You have to